Has the stream started? I think so. आ गई YouTube पे. It's very dumb. The idea is आज की stream में ऐसा कुछ है नहीं खास. I'm just checking एक बार कि मतलब what the hell is going on. The idea is आज की stream में ऐसा कुछ है नहीं खास. I'm just checking एक बार कि what the hell is going on. ऐसा कुछ है नहीं खास. I'm just checking एक बार कि uh, ये wired है but इसका क्या है थोड़ा सा दिक्कत है. ठीक है. I guess I can live with that. So the idea is to watch the stream. जो भी है ये अजीत भारती जी का वीडियो लगाएंगे हम. Really nothing much. में काजू पाने वालों ने हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉइंट ब्लैंक पे अजीत भारती के 21वें एपिसोड में. आइए आरंभ करते हैं. बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक. मोदी जी की जय जयकार हो गई, एकदम गर्दा गर्दा माहौल हो गया, पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं हो पाया. भारत मंडपम में काजू पाने वालों ने अपनी ओर से बहुत परिश्रम किया, परंतु ऑर्गेनिक की बात ही कुछ और होती है. झाल मुड़ी की रीच को देखते हुए फिर से झाल मुड़ी को घुसाया गया, पर आईटी सेलियों की बेस्ट वीडियो यू विल वॉच टुडे की मुहिम के बाद भी चला नहीं. फिर ऐसे में मोदी जी भी सोचे छोड़ो यार, थैंक यू लिख देता हूं लोगों को. मोदी जी के 12 वर्ष होने पे हमें पता चला कि कई नेता लोग स्तंभकार भी बन गए. उनके नाम से मोदी जी कितना गर्दा आदमी है, इसको लेकर अखबारों में लेख छपे. जिस हिसाब का प्रबंध था उस दिन मोदी जी को छोड़कर और कुछ चलना ही नहीं चाहिए था. लेकिन सारा सोशल मीडिया ऐसी जगह है ना, नहीं हो पाया जलवा. लेकिन ऐसे कैसे? अश्विनी वैष्णव जी बोले अभी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और बता दूंगा दुनिया को कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा. वैष्णव जी उपलब्धि गिना ही रहे थे कि अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बार लाइट चली. अच्छा बात नहीं है. मुझे तो षड्यंत्र ही लगता है, वरना बिजली सरप्लस भारत में अश्विनी जी के प्रेस वार्ता में, वो भी जो मोदी जी के बारे में हो, वहां तो शिवाजी द बॉस स्टाइल में थर्मल पावर स्टेशन बन जाए और लाइट आ जाए. अश्विनी जी को वहां धर्मेंद्र प्रधान को बुलाना चाहिए था. उनकी आरती की ज्योति प्रचंड होती है, सब एलईडी फेल हो जाता. कुछ लोग तो लिख दिए कि ऊर्जा मंत्री के सामने लाइट चली. ए भाई, अब ऊर्जा मंत्री है तो क्या. So ironic कि ऊर्जा मंत्री के आगे लाइट चलेगी. मतलब this only happens like you know अगर तुम्हें पता है कि मिनिस्टर आने वाला है वो वाला, तो you have to keep those precautions. और generally ये जो सारे events होते हैं यहाँ पे we know that there are like generators and stuff. So I don't know why this would happen. सीने में आप ट्रैक्टर लेके चलेगा कि जहां लाइट गई छाती से थोड़ी में ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा. वैसे अश्विनी जी में एक I love how अजीत भाई is very एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड भी है लाइक जोक लिखने में. बिकॉज ही और जनरली कभी कभी क्या होता है लाइक अभी जो नीट वाले पेपर का साइट की लीक वाली दिक्कत आई थी. जनरली व्हेन दीज पीपल जर्नलिस्ट टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी और एनीथिंग आउटसाइड देयर डोमेन, दे गेट वेरी ऑफ द टॉपिक. और रादर आई वुड से उनका कैसा होता है वो कुछ भी बोलने लग जाते हैं वहाँ पे, लाइक विच इज़ फार अवे फ्रॉम द फैक्ट या फिर जो कहीं पे उन्होंने पढ़ा है सुना है. But with Ajit bhai, things are very deep. Like he actually does that research. मुझे याद है उन्होंने जो explain किया था about how servers work, they were pretty accurate if for a journalist actually. इजी एलिगेंस तो है जो हमें इंजमाम या रोहित शर्मा की बैटिंग में देखने को मिलता है. अश्विनी जी सदैव ही राष्ट्र हित में व्यस्त रहते हैं. 3 मंत्रालय है तो कई काम तो केवल फोन से निपटा देते हैं. सुनिए. आप सभी स्टूडेंट की डिमांड है आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट बननी चाहिए
विद इन 30 डेज हम बना लेंगे। विद इन 30 डेज 15 जुलाई तक हम IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे। हम सब जानते हैं कि IRCTC की वेबसाइट ब्रह्मा जी ने गणेश जी के दांत से कोडिंग लिखवा कर बनवाई, वरना आप ही बताइए कि हर पैतरा आजमाने के बाद भी सामान्य व्यक्ति क्यों समय से तत्काल टिकट बुक नहीं कर पा रहा। ऐसा थोड़े है कि एजेंट और रेलवे की 60 गांठ होगी। मतलब एक महीने में वेबसाइट इन द सेंस की लाइक यू हैव टू राइट द एंटायर फ्रंट एंड द बैक एंड। IRCTC जिस लेवल का उसका बैक एंड होता है, इट इज नेवर गोना बी पॉसिबल टू डू इट इन 1 मंथ। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दे वुड चेंज द UI और थोड़ा डीबग वीबग कर लेंगे, स्केलिंग बढ़ा देंगे, बेटर कर देंगे, बट इट्स नॉट गोना बी नया वेबसाइट। एंड इट्स सो गिमिकी टू अ पॉइंट कि एक मिनिस्टर को ये सब करना पड़ रहा है ताकि लोगों को खुश रखा जा सके एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इट्स डैम। मोदी जी के समय में ये सब तो खत्म हो गया ना भाई, लेकिन फिर भी देखिए कि मंत्री जी ने एक स्टूडेंट के कहने पे फोन पर ही बात कर ली। एक्चुअली आई एक्चुअली थॉट दैट आई वॉच्ड इट। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये नहीं देखा, सॉरी, बट अगेन देख लिया है ये वाला वीडियो शायद मैंने। अजीत भाई, कूडोस कूडोस। ये वाली वीडियो देखी। हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका एक स्पेशल वीडियो में। देखिए, इंडियन फुटबॉल में पिछले कुछ दिन पहले अभी मीटिंग हुई थी जहां पे ISL क्लब्स को स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बुलाया था। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ एक मीटिंग बैठी थी वहां पे, जिस मीटिंग में बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई थी। उसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है, बट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि उस मीटिंग में हमने एक और इस वीडियो का तात्पर्य ये है कि अभी जो रिसेंटली ना जनरली जो इंडियन फुटबॉल टीम है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स टीम है, उसमें वी डोंट अलाउ पीपल हु हैव डुअल सिटीजनशिप। मतलब ऐसे लोग जो इंडिया से गए हैं कहीं पे दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, उनके पास वहाँ का भी पासपोर्ट है, तो वी डोंट अलाउ देम टू प्ले फॉर द कंट्री। और मल्टीपल कंट्रीज में ये होता है। सो दिस हैपेंस इन अ लॉट ऑफ कंट्री। इफ यू लुक एट द कुरासाओ नेशनल टीम, लाइक 27 या 26 मैन का उनका स्क्वाड है, उसमें से सिर्फ एक ही बंदा है जो कुरासाओ में पैदा हुआ है, बाकी सारे are born in Netherlands, Dutch. They are Dutch. So that's how these things work in football in general. For example, if you look at the top players, there is Lamine Yamal, who can play for 3 countries. There is Michael Olise, who is playing for France but could have played for England. So similarly, there are people of Indian origin who are playing at good levels. Uh, Maybe if they get an opportunity, there is a possibility that the next World Cup of it we can actually qualify. ये हो सकता है because they played a decent level compared to the players in India, but that doesn't solve a larger problem. But let's see what the Khel Now people want to say here. चीज बताई थी, PIO एंड OCI प्लेयर्स पे भी थोड़ा सा कुछ आगे बात चल रही है। एंड उस मीटिंग से अब धीरे धीरे लग रहा है कि बात पे क्लियर होते हुए नजर आ रहा है। अभी कुछ देर पहले मैं अपने वेबसाइट खेलनाउ.com पे बैठ के ऐसे ही सर्च कर रहा था किसी न्यूज को लेके क्रिकेट के, अचानक से नजर पड़ी कि निगिर ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें बता रहे हैं कि कुछ एक पाथवे बनते हुए दिख रहा है, ना सिर्फ फुटबॉल में बट PIO एंड OCI प्लेयर्स के अदर स्पोर्ट्स में भी इंक्लूजन होने की कोशिश हो सकती है आगे आने वाले दिनों में। तो उसके ऊपर एक बड़ा अपडेट है। निगिर, शेयर द अपडेट। सो बेसिकली ये कल्याण चौबे, देखिए जहाँ पे चीजें सही होती है, सही चीज पे क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। कल्याण चौबे जी का ही पुश किया हुआ इनिशिएटिव है कि उन्होंने पहले काफी टाइम से कह रहे थे कि स्पोर्ट पासपोर्ट, या ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, कोई नई डिस्कवरी नहीं है। वर्ल्ड में काफी जगह यूज होती है। आपकी कंट्रीज लाइक बहरीन, आपकी टर्की यूज करती है, कतार यूज करती है, यूरोप में भी कंट्री है वो यूज करती है। स्पोर्ट्स पासपोर्ट को कंसीडर करने के लिए बोला गया है। तो अभी हुआ क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जब कल्याण चौबे ने अपना प्रपोजल दिया, उस प्रपोजल को आगे बढ़ाते हुए और डिटेल ऐड करते हुए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने प्रपोजल भेज दिया है पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस, हाईएस्ट लेवल पॉसिबल इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिसीजन मेकिंग किया गया था, पॉलिसीज होती थी, वहां पे प्रपोजल जा चुका है। एंड आई थिंक उस प्रपोजल को कंसीडर करने के लिए स्पोर्ट्स होता है, प्रपोजल आया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर में मिनिस्ट्री अपना स्टैम्प लगा दिया। तो उसको देखते हुए उन्होंने एक प्रपोजल पीएमओ एंड एचओ में भेजा है कि आप इंडिया को कंसीडर करना चाहिए कि डुअल सिटीजनशिप तो अलाउ नहीं कर सकते, आप जैसे कंट्रीज हैं बाकी जो स्पोर्ट्स पासपोर्ट अलाउ करती हैं, देती हैं, वैसा ही पासपोर्ट इंडिया को भी अलाउ करना चाहिए। उससे सिर्फ फुटबॉल का भला नहीं होगा, उससे टेनिस, बास्केटबॉल, बेसबॉल जो स्पोर्ट्स हैं जहां पे आप डुअल नेशनलिटी के प्लेयर्स काफी यूएस बॉल, यूके बॉल इंडिया खेलते हुए देख सकते हैं फ्यूचर में। अगर पीएमओ ने अप्रूव करती है, मुझे जो बताया गया डिपार्टमेंट का
6 to 8 मंथ का टाइम लग सकता है इस सारी फिजिबिलिटी स्टडी करने में और फिर डिसीजन पे आने में। क्योंकि आप ये बात समझिए कि ऐसा है कि कोई फाइल प्राइम मिनिस्टर के सामने मिल जाती है, कोई उनका जो डिपार्टमेंट है, उनका जो ऑफिस है, वो भी उसमें अपनी रिसर्च करेगा, इंटेलिजेंस करेगा। एंड ये एक और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें हो जाती है। ओलंपिक्स की बिग भी आप प्लान कर रहे हो और ऑलरेडी बिग स्पोर्ट्स पॉलिसी जब लेके आई गई, उसमें भी उन्होंने ओवरसीज रीजन ऑफ इंडिया को एनकरेज करने बोला कि स्पोर्ट्स खेले, इंडिया प्रेजेंट करने का मौका देखें। उसी का फॉलो अप करते हुए आगे एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट आप कह लो, सिर्फ फुटबॉल में स्पोर्ट्स हुआ है। एंड ऑफ कोर्स अगर ये इंप्लीमेंट होता है, अगर गवर्नमेंट इस चीज को अलाउ करती है, सबसे बड़े बेनिफिशियरी इस इंडियन फुटबॉल टीम इंडिया के स्पोर्ट्स पासपोर्ट का एक एग्जांपल बताता है। तो अभी जो कतार की टीम वर्ल्ड कप खेल रही है आपका फीफा 2026 ग्लोबल इवेंट चल रहा है, उसमें अभी या आई थिंक दे आर गोइंग गेटिंग टू द सेम पॉइंट। अब कतार की टीम में ना केरला का लड़का खेल रहा है, who's born in Kerala and he's gonna represent Qatar in the FIFA World Cup। ऐसे ही और आई थिंक डीआर कॉन्गो की टीम में एक लड़का है। तो ऐसे अपने लड़के बाकी की टीम्स में जाके खेल रहे हैं बिकॉज उनको ये अपॉर्चुनिटी हम नहीं दे पा रहे। लड़के हमारे ही है सारे। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव थ्रू दिस पासपोर्ट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट आई थिंक नेक्स्ट वीडियो देख लेनी चाहिए। क्या है अभी? शाउट आउट टू खेल नाउ टीवी। आई थिंक दे आर द फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ getting these things ready, getting the news। वो बहुत बढ़िया करते हैं सब। गाना सुना जाए दोस्तों, बट आई थिंक गाना सुनेंगे तो फिर ये स्ट्राइक पड़ सकती है। Why India is not FIFA World Cup? क्या है? मेरी यूट्यूब की फीड बहुत टॉप है, ऐसे देखना अगर मैं वॉचिंग वन ही है। ये जो बेशर्मगिरी कर रहे हो तुम तो बड़ा वॉचिंग वन भी मैं ही पता है। यहाँ से होना पैसा किधर है जो फ्रेंड्स नरूला डैम वाई मुसीवे। आई थिंक ट्रेलर ऑफ मुसीवे द मिरेकल ट्रेलर। इट्स अ टॉप। Evlenmek isteyen ona çıksın. Ana, Allah'ını seversen benim çıkar ya iyi bak. Ana mümkünse bıyıkları bir de sakalları olmasın. Dişler ne olur iyice bak, biliyorsun dişler benim için en mühimidir. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, ağzı kokuyor. Vallahi 4 ayak üstüne düştü. Benim karı senin karıya hatalarla bitiremedi. Benim karı dedi ki, ben ömrü hayatımda böyle güzel ne gördüm, görmedim. Nasılsınız? Çok iyi. Hele ben iyisin şu lambayı kapat. Evlilik nasıl gidiyor? Abi benden hiç çıkmıyor. Kar gelince bir mahpusluk çöker köyün üstüne. एक्चुअली नेवर न्यू कि टर्की में भी स्नो गिरती है। सो इट्स एक्चुअली देयर इज सम इंडियन पिक्सल्स वाले को पता होगा कि साउंड में कैसी क्या होता है। तो वो एक चीज़ है कि टर्किश लैंग्वेज थोड़ी से रफ बट पोएटिक स्वीट थोड़ी साउंड करती है। Herkes Allah'a teslim olur. Sen bana hayatımı verdin, ben de sana kızımı verdim. Benim oğlum sakattır. Kalbi sakat olmaz. Aziz oğlum. Sana bir kız buldum. Anan görmeye gidecek. Allah sizi nereye yaratmış?
साला लव फ्रॉम केरला वाले कहीं भी पहुंच जाते हैं। मेंस मेंटल हेल्थ इज अ जोक नाउ। वंश द ग्रेटेस्ट। मैन मेंटल हेल्थ एक जोक ही है। रियल में मतलब लोगों ने इतना ज़्यादा वो कर दिया इसकी कि आदमी की मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि आदमी की मेंटल हेल्थ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो बताऊँ कि मैं जब मेंटल हेल्थ पर मैंने ध्यान स्टार्ट किया था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था लाइफ में, मैं कुछ नहीं कर पा रहा और मेरी प्रोग्रेस लाइक बहुत कम हो गई। मतलब मैं पहले तो कुछ नहीं करता, उसके बाद मैं ये चीज़ रियलाइज कुछ नहीं करता लाइफ में। तो मैं सोचा कि मैं काम करता हूँ, लाइफ में करता हूँ। तो मैं शुरू में कुछ की थी, मैंने हैबिट्स की थी, जिसकी वजह से मेरी एनर्जी इंप्रूव हुई थी। मैंने अच्छा खाना खाया, जब मैंने जो इंप्रूव किया हैबिट्स का मतलब ये कि मैंने अपनी एनर्जी इंप्रूव किया। तो उसके बाद धीरे 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 मतलब हैबिट ने काम नहीं कर दिया मुझे। मतलब ऐसा शिकार होने लगा कि मैं कुछ करने लगा नहीं। अभी मैं कुछ काम मैं बोलता कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता ही था, वीडियो डाल देता महीने में कभी 2 वीडियो डालता। मैं सोचता मैं बहुत स्पेशल हूँ, बहुत जल्दी हो जाऊँगा, वीडियो डालने से मेरी पूरी सब कुछ बन जाएगा, पैसा कुछ नहीं बढ़, ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे इतना बेकार होता था जब मैं कुछ काम कर रहा था। उसके बाद मैं सोचता कि यार मुझे इतना बेकार क्यों फील हो रहा है, मुझे अपने आप इतना बेकार कैसे फील हो रहा है। तो मैं मेंटल पे काम करना स्टार्ट कर देता था। सोचता कि कल से काम होगा, कल से मेंटल हेल्थ करूँगा। मैं हैबिट्स करता था, मैं दिन को अच्छा करता था, 15-20 मिनट में काम करता था। उसके बाद सो जाता था। मैं सोचता चलो दिन मुझे प्रोडक्टिव किया मैंने हैबिट्स की, मेरी हैबिट्स की। और इस चलते एक टाइम पे इतना मेरे साथ हो गया था कि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं क्यों कर रहा हूँ, हैबिट्स भी कर रहा हूँ, मेंटल हेल्थ भी सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छे से सोच पा रहा हूँ, सब ठीक है, पर मैं काम नहीं कर पा रहा। मेरा मेन वर्क है, मैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहा हैबिट्स की वजह से, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये हुआ कि जब मैंने हैबिट्स करना छोड़ा, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हुई, रियल मेंटल खराब हुई। और फिर मुझे बहुत बड़ी रियलाइजेशन दिखी कि मैं भी लाइफ नहीं सकता हैबिट्स से बच के। मुझे जो मेरी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी थी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने घर में रह रहा हूँ, मुझे नहीं रहना, मुझे अभी अपने घर से मूव आउट करना है, मुझे नई चीज़ करनी है, पर मैं नहीं कर पा रहा। अब इस चक्कर में पहले अपनी मेंटल हेल्थ को शांत करके बैठ जाऊँ कि ये थोड़ा रिलेटेबल क्यों लग रहा है? एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल एंड सब कुछ ठीक है लाइफ में, ये जियो वो नहीं, मुझे नहीं जीना, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी जो मैं अभी जी रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मैंने उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया जो मेरी लाइफ पे फिक्स करे। मान के चलो कि मैं अपने घर से मूव करना चाहता था, मैंने काम करना स्टार्ट किया मनी पे। जब मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट करना किया तो मैं अच्छे से काम कर पा रहा, ठीक है। मतलब मैं काम 1 year ago, it's late evening, and I'm walking out of the gym. My hoodie's on, it's cold outside, when I notice one of my friend girls waiting outside her car, staring straight at me. She bites her lip ये इन एनआरआईज में हो क्या रहा है? लेट्स सी व्हाट द हेल इज a little bit, gives me a very weird look, like she's about to tell me something that she's not supposed to. And I ask her what's up, and she says that she needs me for something tonight. happening? What do you mean, bro? And immediately my mind kind of goes to, you know exactly what. But little did I know, this was probably the weirdest thing I've ever been asked for in my life. And so the next thing you know, I'm in her car, and she's driving me to an empty parking lot nearby our local mall, which is 5 minutes away from the gym. But it probably isn't for the reason that you think. Because on the way there, she was explaining to me that there's this guy that she used to know back in her high school days that's recently hit her up on Instagram. So I expect this to be like a date with this guy or something. So it's like, okay, so I mean, why are you bringing me along to this date of yours? But it wasn't actually a date. This guy hits her up on Instagram, requesting something very, very, very odd. And I asked her, like, what is it? Is it feet pics, guys? मैन मेंटल हेल्थ एक जोक ही है। रियल में मतलब लोगों ने इतना ज़्यादा वो कर दिया इसकी कि यार 1 year ago, it's explicit with this guy. Something provocative, maybe. And so I try to dig just in case nothing happens. To tell me at all. However, she says she's getting paid a lot to do this. $1,000, bro. Literally $1,000. And she's willing to give me a cut of the money as long as I tag along with her, just in case nothing happens. Just in case what? Like, this guy. So it's like, okay, so, I mean, why are you bringing me along to this date of yours? But it wasn't actually a date. This guy hits her up on Instagram, requesting something very, very, very odd. धवल भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। I'm just looking at random videos on YouTube. अभी मैं I'm trying to हाँ ठीक क्या? No bro, you are not gonna do it. You are not trying to go into it. Actually ये वीडियो है ना, बेसिकली बात ऐसी है कि कुछ तो स्टोरी बता रहा है वो, एंड स्टार्ट उसने बहुत वियर्ड करा है। तो आई एम वेरी क्यूरियस, और वो जस्ट रिवील ही कर रहा है, और वही मिस हो रहा है वो वाला पार्ट। And I ask her, what is it? And she does not want to tell me at all. However, she says she's getting paid a lot to do this.
$1,000, bro. Literally $1,000. And she's willing to give me a cut of the money as long as I tag along with her. She'll get 1,000 and pay her to do the film at all. Definitely. How? Who already did it. Double salute. Keep it up. Basically, now he hasn't told us. उसने बताया नहीं अपने को कि क्या कर रहा है. Right? Do you wanna join the link भेज दूँ तुझे मैं? बट नहीं, सेटअप करने में मेरी लग जाएगी. But क्या हो रहा है यहाँ पर? She said she's getting paid a lot to do this. $1,000, bro. Literally $1,000. And she's willing to give me a cut of the money as long as I tag along with her, just in case nothing happens. Just in case what? Like, this guy tries to attack me? What's that? I'm getting all these weird, like, confusing signals right now. Like, what is going on? Are you secretly a drug dealer? Is this guy a drug dealer? Or are you doing something explicit with this guy? Something provocative, maybe. And so I tried to dig a little deeper, just to kind of get a proper understanding of what's going on. So I asked her, so do you know this guy? Have you met him before? Have you done anything, like, with him? And she's like, oh, yeah, I've gotten money from him. The whole is like, nah, continue. Baap ji tod do. Good night, bro. Hope you have a great night. मैं तो सो मान क्योंकि आज ब्राजील मोरक्को का मैच है. Have a good sleep after all that gening. Before, but that was online. And so immediately it clicked in my head. Oh, okay. What's the first thing that comes up to your mind? Okay, so it has to be she's probably sent her some like videos of herself to him for money or something like that, right? And now it's like transferred from online to real life. Because like, okay, no wonder she doesn't tell me. Because it's probably really shameful for her. I know money can be hard to get nowadays. Not that I agree with her doing what she's doing right now for a financial gain, but I'm here, so what can I do? And so about 5 minutes go past, and we end up reaching the empty parking lot where this whole thing was apparently going to go down. And we end up parking, and she tells me that to stay in the car, and that she shouldn't be too long. 5 minutes up, do what you do. And then she's like, but if I take any longer than 5 minutes, you have to come and check on me. Okay? दोस्तों 5 मिनट के बहुत ज़्यादा टाइम होता है. Or is it like too small? मतलब time. I'm like, okay, sweet, okay. And so I am 5 minutes, 6 minutes, word. And I'm just contemplating going out and checking around. This guy actually tried to attack me or whatever. The car door. I see her coming back. Thank God. Whew. She sits back in the car, and she shows me her phone just like this. And I see plus $1,000 in her bank account. क्या दोस्तों उसे बोला गया था कि आज 9:30 बजे आ जाना और वो MLM स्कीम वाले के पास 9:30 बजे चली गई. And then you know what happened. They gave her straight $1,000. Is it like that? She wasn't lying, and she transfers like $100 or $200 straight to me. And I'm like, thank you. Look, I know you probably don't want to tell me what happened, but it's really like irking at me. I really want to ask, and I just really hope it wasn't uncomfortable or like painful for that. Gang, you made uncomfortable. मैं यहाँ से uncomfortable हो. I hope this guy didn't like do anything bad. He's like, I don't know like about your financial situation, but I don't know if this is the right way to go about things. Oh no, don't worry about it. It was the easiest $1,000 I've ever made. MLM isn't easy, guys. I got paid to insult him. Damn, insult? At least in. I don't want to get mad. You all paid to insult him. Did I hear that correctly? $1,000. On that ride back onto my car, she started explaining to me that this guy that she knew back in high school was a very lonely virgin. Guys, let's end it here. Are we watching Arpit Bala? They always have fucking 4 to 5 women who have been listening to her bullshit from day one. तुम्हारी relationship की पहली चीज उनको पता थी, आखिरी चीज उनको पता है अच्छे से. लड़के से पूछो बहन चोद मार नहीं पड़ी है भाई, नंबर नहीं आ रहे, बात झड़ रहे, बहन जॉब नहीं लगी, बंदी और छोड़ गई भाई, कैसा चल रहा है? चल ही रहा है भाई. मेजर रिलेशनशिप्स होते हैं वो 6 to 8 months के होते हैं, जिसका कोई एक्सपायर नहीं होता, जिसके अंदर कोई वो नहीं होती बॉन्डिंग, स्पेशली मतलब फिजिकल, मतलब वो जो होता है ना मेंटल एसेट मैच नहीं होता, 6 से 8 महीने तक चलते हैं. बट दिक्कत ये आती है कि उसके अंदर तुम्हारा पता चल जाता है 10% इसके साथ नहीं बन सकता, बट 6 से 8 महीने में आपकी अटैचमेंट भी हो जाए. तो आप क्या करना चाहिए? आपका जस्ट ब्रेकअप हुआ है, you don't know what to do, क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज जो आपको करना है, you have to fucking accept the fact that she has left you, man. That she has fucking left you, she's not coming back. She's actually saying with Anna, she's talking to another dude. Damn. She has accepted things. Women, they accept things like this.
एंड इसमें मैं यहाँ पे कोई शॉट नहीं ले रहा हूँ औरतों पे. तुम्हारे को पता है why women find it easier to fucking get over and accept things? एक ना मैंने एक फिनोमेना होता है, उसको बोलते हैं गर्ल ग्रुप, गर्ल बेस्ट फ्रेंड्स, गर्ल बेस्ट फ्रेंड्स. आप किसी भी लड़की के पास जाओ, I don't know how, but man, fuck bro, all these women, they're always ready with the breakup. They're always ready. They're fucking stacked. दुनिया में और कुछ चीजें हो ना हो, they don't know how to do jack shit, but for a breakup, they're always fucking ready. They're always ready. World War II हो रही है, nobody knows क्या होने वाला है and everything, but fucking breakup. Now we'll read tweets. अब क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो अपने को दिखने वाला है बस फीफा वर्ल्ड कप का कंटेंट यहाँ पे. Ralph Ragnick has signed a new long-term contract with Australia head coach until ठीक है ऑस्ट्रिया के साथ मतलब जून 2028 is basically यूरोस तक. He is not gonna join AC Milan despite reports. बढ़िया है. Nitish Kumar Reddy calls mothers call him when he was attending press conference. मम्मी को कॉल कर दिया. बढ़िया. X is really one of its kind platform. No other platform exists where I can say hello to a trillionaire. I'm sorry he's not gonna reply, but this is the only platform where such posts get a chance to show up in his feed. Hope he replies, man. Because like, we have one genuinely world-class player, and that's Harry Kane, obviously. But Declan Rice is top three CM. Top three, I won't say top three, but he's top five. Jude Bellingham is top three number tens. Top three, top 10 number tens में है. Top five actually. अगर 2 साल पहले पूछते तो वो top number one. रीस जेम्स top three रेड फ्लैग नहीं. साका तो बिल्कुल भी नहीं. That's the goats right there, guys. That's literally the goats. Yeah, sorry. So cursor थोड़ा सा हो गया था. I would always prefer them in terms of watching, not. Okay. I think I went too far. Leicester City are closing in on the fall. ठीक है. बहुत फुटबॉल है इसमें यार. I'm not sure. It's time we start judging people based on their favorite kind of comedian. Actually, अब ये जो भी प्रणीत वाला सीन हुआ था, I hate Pranit. I don't like him. Not in the sense कि I actively hate. There is one thing like active hating जहाँ पे तुम you watch someone and then you start going like यार इसको मत देखो जो भी दिखता है वो जो भी है. But specifically when we talk about a type of content somebody makes and when you watch that for 2 3 4 minutes and you're like nah man this isn't for me. तो वो मेरा वैसा है प्रणीत के साथ. I don't like him. I feel he's a very annoying guy. He gets paid for what he does. Crowd works. I don't think that's like a very efficient नहीं बोलूँगा. Not the best way of spreading your comedy. But again, people laugh, so why do we care? But again, it's dumb. रहमानुल्लाह गुरबाज ने 48 बॉल में 100 मारी. Did India win chat? देखिए. Great buzz. India won by 7 wickets. कम ही मारे थे. Did Gill score a century? 84 not out. सही है सही है. ईशान भाई हार्दिक भाई would be proud. KLR ने भी बढ़िया किया. सही है. Makes sense. I think bowling में who had the best day out there? हर्षदीप 2 wicket. गुरनूर ने 3 लिए. सही है. हर्षदीप. So both of the debutants got a 3 for. बढ़िया. Sota models can be trained for 10 billion with 5 billion spent on getting the top. Sota model. State of art models. Okay, sorry. $10 billion. $10 billion कितना होता है पता है? $10 billion में तुम I'd say you would buy like Manchester United को तुम 5 बार खरीद सकते हो. That's $10 billion and it's a big money.
अ गुड क्वालिटी फाउंडेशनल मॉडल बनाने में फंस जाती है लोग, बिकॉज even if you can make it, making is never the problem is maintaining it. जितना ज़्यादा इंटेंसिव होता है जीपीयूज मैनेज करना, लाइक ज़्यादा रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पाता है जीपीयू एक टाइम पे, कंपेयर करो तो मतलब इट्स वेरी टफ टू स्केल। और कंसिडरिंग कि ये जो चैट जीपीटी और क्लॉड के मॉडल्स है बिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग, सो टू रिप्लेस दैट इट्स नॉट इजी, दे आर बर्निंग मनी लाइक हेल। चैट जीपीटी भी माइक्रोसॉफ्ट का पैसा था इसीलिए अब तक चल रहा था, क्लॉड पे भी ऑलमोस्ट एवरीबडी इज फंडिंग क्लॉड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यू हैव टू बी, it's not going to be like a startup who does it, it's not going to be the government who does it, because government has thousand other things to focus on and AI should be one of them, but again that's not their sole focus. I think it's something where the corporates should come in of India and take the mantle of doing it. Like they should find 2 3 labs who are doing it, or उन labs को फिर support करो, सर्वम is doing it, but सर्वम कर रहा है, ऐसे 2 3 लोग कर रहे हैं, तो you should support them, invest in them. The Infosys, the Wipros of the market should be supporting them. Cristiano Ronaldo becomes key icon, winner boy of the World Cup by Dutch. Damn, the psychosis is alive and well here on X. The everything app. Assume Anthropic is able to restore Fable in the next few days. There is literally 0 point. Any meaningful work is done until back then. What can be done in 100 hours developers can be done in 1 week Fable. Hopefully this figure out quickly. So he is an investor in Grok, Open Router. My man is a top AI gamer and Anthropic ने बंद कर दिया access. So it's actually very saddening कि हम लोग we cannot use Fable, हम नहीं use कर पाएंगे. But there's nothing much we can do, right? Someone should set up a community like community funded Fable run with the prompt like loop until you have created a GTA 6 caliber open world game with a quality and scope. Happy to write the prompt if someone organizes either a serious engagement Einstein of or just so deep in psychosis. हाँ, फोर्डन और पाल्मर यही करेंगे वो लोग, यही है। Ask my cousin, do they ask MBS interviews? Okay, ML engineer है ना? That might be true for any senior level, but at entry level DSC Apple tend to focus on system design. हाँ मतलब it was down. कौन है हर्ष? हर्ष भाई आप दिख ना जाओ इसमें मुझे। म्यूट म्यूट कहाँ से करता है? Okay, Pochettino, what are you holding behind? Dear Indian corporate, dump Microsoft 365, embrace woman. Okay, ये कौन है? सुंदरा राजन. Sorry सुंदर भाई. Actually, they could have just given her the plate. ऐसा हाथ नहीं कर दिया. See, that's not how things are done, gang. Whoever is against data centers should immediately delete their Twitter or other social. Your one tweet is literally saving 40 liters of water. Does tweeting your ugly selfie matter more than saving water? Yeah, that's the point. The government would ban it. Nah. Uh, no. Hope they refund it, by the way. मैं फेबल ट्राई भी नहीं कर पाया. मुझे देख आई वाज सीइंग फेबल बट आई वाज ट्राइंग टू सेव द टोकन्स फॉर कोडिंग, बट अगेन जैसे ही मन किया यूज करने का तो बंद हो गया.
like a fabled भी toned down version ही था mythos का, but I think uh, they won't be able to. Maybe they would have to make one more toned down version of it. But again, मुझे लगता है this is more of a marketing tactic. ये जो fable और mythos है, इन्होंने इतना खतरनाक मार्केटिंग किया है इसका, टू टेल पीपल कि यार ये बहुत खतरनाक मॉडल है, इट्स वेरी डेंजरस, है ना. सो कहीं ना कहीं इट वाज वेरी, आई थिंक दिस वाज द मोस्ट हाइप्ड मॉडल एवर एआई में, कि इस मॉडल के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं इतने सारे हफ्तों से, इतने सारे महीनों से. बट द प्रॉब्लम हैपेंड व्हेन दिस एक्चुअल फियर, जो कि इतना कंसर्निंग नहीं होता अगर वो इतना डेंजरस मार्केटिंग नहीं करते. नाउ एक्चुअली पीपल थॉट दैट दिस इज गोइंग टू बी सुपर क्रेजी, द गवर्नमेंट हैज बैंड इट, समथिंग लाइक दैट. तो दिस इज अ वेरी, अगर तुम इतनी हाई पीआर करोगे तो इट इज गोइंग टू हैपन. सो आई थिंक पैसा बहुत बर्बाद हुआ उसका, बिकॉज टू मेक समथिंग उस लेवल का मॉडल यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, and on top of it if people are not going to use it, it's just a waste of money. So it was, पहली बात तो पता नहीं है पैसा किससे रिकूप होगा. पैसा तो कंज्यूमर से ही रिकूप होगा, ऐसा तो नहीं कि द एंथ्रोपिक इज गोना पे फॉर इट. वो तो है ही, वो पे करेंगे. बट अगेन आई थिंक अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अपने कार्ड शो कर दिए कि they don't want people from the other countries to have access to that level of intelligence, and I think that's kind of racist from my perspective. So let's see what the other governments retaliate using. I think the China is the most equipped one uh, to solve these problems because they have people working on it. But again, the other countries like the Russians, the Indians are way behind in this AI race. Indians specifically, we haven't been able to, reach the higher marks. Like uh, we have made small models like 200 million, 300 million, Sarvam Varvam ke, but I think most probably they are also models which are like fine tuned or something. I have no idea about this. Please go and check if you want to. But there needs to be a lot of research from India's side, and I don't see active research going on. Nonetheless, ISL clubs should still try to send PIOs. The last time World Cup felt like World Cup, only cricket World Cup that comes close to FIFA World Cup in number. 2015 World Cup was banger by the way. Like सुबह सुबह उठ के matches देखना was amazing. 14 teams थी, सात सात टीम थी दोनों. It was amazing if you look at it. So yeah, first day in Delhi, some foreigners were smoking ganja near the pool in Supernova Square. Guard told them not to smoke in public place, they ignored. In India, the lecturer said extension was bounced. If you see white, you usually get free pass to do it. Okay. Anthropic will replace humans. It will. If FIFA was organized by ICC, then we have got Argentina versus Portugal on Sunday with so many cringe promos from after. We would have. Portugal will win the World Cup. That's enough speech for today. Yeah. Balurun, Balurun. इसकी पता नहीं रीच रीच का क्या सीन है इसका. आई एम ट्राइंग टू हैव लाइक चैट फूड बट क्या करूँ. पोर्तुगाल विल विन द वर्ल्ड कप. ठीक है, अफगानिस्तान बोल रहा को वन. Okay, why the hell is there a lion in this? Is she gonna name him Leo? I don't know. Mark your attendance if you're looking to find ex-friends right now. What's your top two saddest songs of all time? I think it is, क्या नाम था उसका, हासिल and La Hasil by Saini Khan Durrani.
Please ban them. I am done with this shit. Smartest. Literally buying a plot of land, thinking about future. I've tried paper one. Yeah. 49% of people in my feed are learning web dev web 340 and IDSM to are learning now. Is my it takes a mm, specific amount of autism to believe in AI and थोड़ा सेंसर कर देता हूँ क्या मरना नहीं Chat GPT has the norms, Cloud has the dev, Gemini has psychos who make WhatsApp fakes. I would choose. What would I choose? Adobe would be top, obviously. Amazon, I think. I would choose Google. Meow. चलो आई थिंक फीफा वर्ल्ड कप का टाइम हो गया दोस्तों मेरे अर्ली शाटा वाली हाँ व्हाट डायलॉग I think gang thanks for bearing with me. I think it's been a long stream. लॉन्ग मतलब लॉन्ग क्या है बट अगर 12 बजे करूँगा तो वैसे भी रीच नहीं है होप सो आई हैड अ ग्रेट टाइम होप आई डोंट डिलीट इट बाय बाय चाओ